Hello student, today we are going to learn about the kinds of sentences. Sentence means a group of words that makes complete sense is called a sentence. मतलब एक ऐसा शब्दों का समूह है जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. आफ्टर दैट वी learns about the definition, we learns about the kinds of sentences. There are four kinds of sentence: assertive or declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence or exclamatory sentence. First we learns about assertive sentence or declarative sentence. Sentences which simply say or state or declare something are called assertive or declarative sentence. A assertive sentence also makes statement. A assertive sentence begins with capital letters. Assertive sentence ends with full stop. Sentence which simply say or state or declare something are called assertive or declarative sentence. मतलब ऐसे सेंटेंस जो किसी के बारे में कुछ बताते हैं, किसी के बारे में कुछ डिक्लेयर करते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? assertive और declarative sentence. assertive sentence की एक बात, खास बात वो है कि किसी को क्या बनाता है? स्टेटमेंट करता है. assertive sentence begins with capital letters. assertive sentence किससे शुरू होते हैं? तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. assertive sentence ends with a full stop. assertive sentence किससे ends होते हैं? तो वो full stop से होते हैं. all this statement we can classify with the example. The sun rises in the east. Here, this part of the sentence says something about the subject, the sun. So, the sun rises in the east. मतलब this sentence says something about the sun. So, it is called a declarative or assertive sentence. In the second sentence, this part of the sentence is an intelligent boy says something about Krunal. So this sentence is also called a assertive sentence. And third, Sachin is a good batsman. Ashoka was a great ruler. Here is a good batsman says something about Sachin. So this sentence is also called a declarative या तो assertive sentence. This sentence ends in full stop. In green color, this punctuation marks is called a full stop. So our all the sentence, assertive sentence with the capital letter, here K, S or A also capital letter and ends in a full stop. Okay. And now we learn about interrogative sentence. Second part kinds of sentence is interrogative sentence. Sentences which simply ask a question, something about someone, are called interrogative sentence. ओके मतलब जो सेंटेंस जो किसी के बारे में कुछ पूछता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चंस, मतलब वो किसी के बारे में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन पूछता है, मतलब प्रश्न पूछता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस also begins with capital letter. इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है? तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है.
एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे एंड्स होता है? तो क्वेश्चन मार्क से एंड्स होता है। फॉर एग्जांपल, इज राहुल गुड बॉलर? डज अनीता रन फास्ट? वेयर इज द एरोप्लेन? हु इज अशोका? In this first sentence, we say that this sentence begins with a capital letter, ends in this marks. This is red color, green color indicates that a question marks. So this sentence ends in a question mark. And this part of sentence asks something about Rahul. वो क्या कहता है? राहुल अच्छा बॉलर है। Does Anita run fast? Here this sentence asks about Anita. Here where is the aeroplane? Here this questions ask about the place of aeroplane. And who is Ashoka? In this sentence asks about Ashoka कि अशोका कौन है? तो ये सभी सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस begins with capital letter and ends in a question mark. But these interrogative sentences are divided into two parts. First, simple इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि जो सिंपल क्वेश्चन है वो। सेकंड पार्ट इज दैट WH क्वेश्चन। दूसरा पार्ट है कि WH क्वेश्चंस। Why we say that simple interrogative sentence? Simple interrogative sentence begins with to be verb is, am, are, was, where। मतलब सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो किससे शुरू होते हैं? तो टू बी वर्ब is, am, are, was, where से शुरू होते हैं। दूसरा कि हेल्पिंग वर्ब has, am, had, do, does, did, will, shall, etc. etc. मतलब shortly we can say that simple interrogative sentence begins with to be verb is, am, are, and also helping verb has, have, had, or do, does, did, must, will, may, might, etc. etc. Ends in question mark। तो किससे एंड्स होता है? तो क्वेश्चन मार्क से एंड्स होता है। We also learn most, we clarify about simple interrogative sentence by the example, is Amar a clever student? यहाँ क्या क्या पूछा जाए तो देखो तो ये सेंटेंस किससे शुरू होता है? तो टू बी वर्ब इससे शुरू होता है। एंड्स किससे होता है? तो क्वेश्चन मार्क से एंड्स होता है। जो ग्रीन कलर में है वो क्या बताता है? क्वेश्चन मार्क बताता है। मे आई कम इन सर? तो here this sentence also begins with a auxiliary verb may, and also this verb begins with this sentence begins with a helping verb will and then do, ends in a question mark. So these four sentences are called a simple questions and also a interrogative sentence. Okay. After that, second part is that WH questions begins with WH word who, where, when, which, why, how much, how many, etc. etc. WH क्वेश्चन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे कि who, what, which, where, why, when, etc. Ends with a question mark. किससे एंड्स होता है? तो क्वेश्चन मार्क से एंड्स होता है। सिंपली वी नो दैट अबाउट दैट ऑल द इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इन अ क्वेश्चन मार्क।
For example, here, who is Aman? Here, this picture begins with WH word who. I asked about Aman. Aman कौन है? Secondly, where do you live? Here, this picture begins with a where. So it is called a WH word. Pictures WH where do you live? वो आपको आपके प्लेस के बारे में पूछता है. Here, when did अनीता come? अनीता कब आती है? वो अनीता का आने का समय पूछता है. But all this sentence begins with a WH word and also capital letter and ends in a question mark. Okay. After that, we learn about imperative sentence. Sentences which expresses a command, a request or desire is called a imperative sentences. Sorry friend to interrupt. Here imperative sentence इसको बोलेंगे sentences which express a command, a request or desire is called an imperative sentences. A imperative sentence express command, a request or desire. Imperative sentence क्या करता है? तो किसी की रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करता है, किसी के कमांड एक्सप्रेस करता है, या तो किसी की इच्छा है चाहे विश है वो उसको एक्सप्रेस करता है. इंपेरेटिव सेंटेंस आल्सो बिगिंस विद कैपिटल लेटर. और भी किससे शुरू होता है? तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है. इंपेरेटिव सेंटेंस आल्सो एंड्स विद अ फुल स्टॉप. इंपेरेटिव सेंटेंस किससे एंड्स होता है? तो वो भी फुल स्टॉप से एंड्स होता है. फॉर एग्जांपल, स्टैंड अप. सेकंडली, माइंड योर टंग. प्लीज अलाउ मी टू पास. डोंट मेक अ नॉइज. Here we clarify that कि imperative sentence में हमें वो जो सब्जेक्ट होता है वो सामने वाला सेकंड पर्सन है, जो लिसन करता है वो होता है. अगर आप उसमें यू डाल देते हैं तो यू स्टैंड अप, यू माइंड योर टंग, यू प्लीज अलाउ मी टू पास, यू डोंट यू मेक एनी नॉइज. यू डोंट मेक एनी नॉइज. सो यू मेक अ you is also used as a subject. Okay, so this imperative sentence here express order. Here also order, command. Please allow me to hear. This sentence expresses a request because it is used please hear. Okay, and don't make a noise. Here also used express a order. Okay, after that exclamatory. After that, fourth part of the kinds of sentence, exclamatory sentence. Sentence which express some strong feelings are called an exclamatory sentence. An exclamatory sentence express a command, a request or desire. An exclamatory sentence also begins with how or what. वो क्या करता है? किसी की स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो एक्सप्रेस करता है. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आल्सो बिगिंस विद हाउ और व्हाट. मोस्टली वी यूज्ड हाउ एंड व्हाट to make a interrogative sentence, but here we use how and what to express our strong feeling. After how we use only adjective, or after what we use article plus adjective. An exclamatory sentence also ends with an exclamation marks. कि जो exclamatory sentence है वो exclamation mark से ends होता है, जो green color में आपको बताया गया है. How exciting the trip was. How exciting the trip was. Here exciting is only adjective here. Okay, but second sentence we use what an interesting match it was. We used here interesting as an adjective, but we use here article an article. So here what, this sentence begins with how and what, and also ends in a exclamation marks. Okay my dear.
You know very well about the kinds of sentence. First kinds of sentence, there are four kinds of sentence. First statement or declarative sentence, इसको हम also called assertive sentence बोलते हैं. Second kinds of sentence is interrogative sentence. Third kinds of sentence is imperative sentence, and fourth kinds of sentence is exclamatory sentence. All this sentence begins with a capital letter, but it ends with a different kinds of punctuation marks, like a full stop. Statement ends in a full stop. Interrogative ends in a question mark, and also imperative sentence ends in a full stop, and third exclamatory sentence ends in a exclamation marks. Now after learn the sentence, we will try to solve the exercise. First we identify the sentences and write its kinds. आपको क्या करना है, ये सभी सेंटेंस को पहचानना है और उसको आपको उसके नाम बताने हैं. नेपोलियन was a great leader. Why are you sad? Third sentence, what a delicious meal it was. Open the door. How exciting the match was. 6 is, which subject does Mr. Patel teach you? And last, I am a principal in this school. My dear, try to solve this sentence see the rules of the sentences. Okay, my dear, I wish you try to learn it. Okay.